वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए पढ़ते हैं हम लोग यूजीसी नेट मैनेजमेंट यूनिट 8 स्टैटिक्स इन मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, पीईआरटी के बारे में पढ़ा, क्यूइंग थ्योरी के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कंसेप्ट ऑफ रिसर्च वेरिएबल से। वेरिएबल्स पहले क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। वेरिएबल इज अ टर्म फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, grouping variables, dependent variables is equal to outcome measures. Independent variable, researcher can manipulate these variables. Dependent variables may be influenced by manipulation of the independent variables. Extraneous variable, variable that may affect the research outcome but have not adequately considered in the study are termed as extraneous variables. हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? चाई स्क्वायर टेस्टिंग इसके अंदर एक आता है। चाई स्क्वायर टेस्ट ऑफ independence determines whether there is an association between categorical variables. It is non-parametric test. It is a statistical test. It is used to compare observed result with expected result. ये याद रखिएगा, चाई स्क्वायर टेस्ट का जो इस्तेमाल जो है, यूज जो है हम लोग करते हैं, यूज टू कंपेयर ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स with expected results. It is used to compare observed results with expected results. The smaller the p-value, the stronger the evidence that you should reject the null hypothesis. Degree of freedom क्या है? DF, degree of freedom indicates the number of independent values that can vary in an analysis without breaking any constraints. Degree of freedom is equal to n-1. DF for chi square test is r-1 into c-1. r रो है, c कॉलम है. पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है? It makes assumption about the parameters. General assumptions: the population data are normally distributed a bell-shaped curve. Non-parametric test क्या है? Distribution free and it can be used for non-normal variables. Chi square test, a statistical test used to compare observed result with expected result. Null hypothesis क्या है? There is no significant difference between the observed and expected frequency. Application of chi square test: goodness of fit, independent variables, homogeneity of proportion. Concept of facility location. Techniques used in making location decision: location rating factor technique, center of gravity technique, transportation technique, Murray related to facility layout planning. Types of facility layouts: process layout, product layout, fixed position layout, cellular manufacturing layout, combination or hybrid layout. Factors affecting a facility layout: material, product, machinery, type of industry, management policies. Process of facility layout design. Process क्या है facility layout design का? तो information gathering, production and material flow analysis, support services, implementation and evaluation. Two main technique of designing facility layout are block diagram and Richard Muther's systematic layout planning. New approaches of layout design: CRAFT, CRAFT, computerized relative allocation of facility techniques. ALDEP, automated layout design program. ORLAP, computerized relationship layout planning. काइजन इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। काइजन का जो कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है। मसाकी लामा इज नोन एज द डेवलपर ऑफ काइजन. नाम याद रखिएगा, मसाकी लमई. Masaki Lamai is known as the developer of Kaizen. Kai means change or the action to correct. Zin means good. Kaizen is a small incremental change made for improving productivity and minimizing waste. Three main principles of Kaizen: consider the process and the result, the need to look at the entire process of the job at hand, and to evaluate the job as to best
feet we get the job done. आप जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और विस्तार से इसका जो रिमेनिंग हाइलाइट्स है उसको पढ़ेंगे।